Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। Warm welcome अविनाश। गुड इवनिंग। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Key domestic stock indices end in red for the sixth straight session. Sensex tanks 901 points, Nifty dips 265 points. Regional connectivity scheme Ude Desh Ke Aam Nagrik completes 6 successful years. And launch of reference fuel fosters Atmanirbhar Bharat, says the Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार छठे सत्र मंदी में रहे। सेंसेक्स 901 अंकों और निफ्टी 265 अंकों की गिरावट पर हुए बंद। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक योजना ने 6 सफल वर्ष पूरे किए। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेफरेंस फ्यूल की शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे सत्र गिरावट में रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.41% के नुकसान से 901 अंकों की भारी गिरावट दर्ज करता हुआ 63,148 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.39% की मंदी से 265 अंक कम होकर 18,857 पर आ गया। पिछले 6 सत्रों में सेंसेक्स 3,300 अंकों से अधिक की कुल गिरावट दर्ज कर चुका है, जबकि इन 6 सत्रों में निफ्टी में लगभग 970 अंकों की कुल गिरावट दर्ज हुई है। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां तुलनात्मक रूप से गिरावट कुछ कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग 1% के नुकसान में और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 0.3% के नुकसान में रहे। The key domestic indices extended its losses for the 6th straight session amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex fell 901 points or 1.41% to close at 63,148 mark. The NSE Nifty declined 265 points or 1.39% to close at 18,857 level. The Sensex began the day at 63,774, then rapidly fell to its intraday low of 63,119 shortly after the opening bell and finished the day at 63,148. In the past 6 days, the Sensex index witnessed a decline from 66,428 to 63,119, amounting to a loss of over 3,300 points. Similarly, the Nifty had a takeoff on a weak note today, touching an intraday low of 18,843 and finished the day at 18,857 level, amounting to a loss of approximately 970 points in 6 days. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell around 1% and the small-cap index slipped around 0.3%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 4 companies appreciated while 26 companies declined. Axis Bank climbed 1.74%, ITC gained 0.35% and HCL Tech rose 0.2%. On the other hand, Mahindra crashed around 4%.
Bajaj Finance dipped 3.54% and Asian Paints tumbled 3.36%. In sectoral indices at the BSE, all sectors witnessed losses except Utilities Index, which gained 0.35%. Auto sector declined 1.8%. Metal, oil and gas and financial services sectors fell 1.54% each. The overall market breadth was negative as shares of 2,335 companies declined, while those of 1,330 companies gained. A total of 135 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 23 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 106.82 पर था। क्या कहेंगे आप अविनाश जी, 6 दिनों से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं भारतीय बाजार में, और जैसा कि हमारी स्टोरी में भी कहा गया है कि वैश्विक शेयर बाजारों में भी खासी गिरावट है, वहां से भी नेगेटिव क्यूज आ रहे हैं। बता सकते हैं हमें कि चिंता के प्रमुख विषय क्या है बाजारों के लिए और आगे किस तरह से प्रभावित रहेंगे बाजार इनसे? तो देखिए, पहली बात तो बाजार में जो बिकवाली हुई है इसका एकमात्र कारण है कि एफआईआई की बिकवाली बहुत भारी बल्कम में हुई है। कल 4,000 करोड़ का सेल ऑफ एफआईएस की तरफ से आया। आज जो नंबर आ गया है एफआईएस का वो करीबन 7,700 करोड़ की सेलिंग इन्होंने की है। तो एक तो रीजन बाजार में गिरावट का रीजन क्लियर है कि लिक्विडिटी बाजार से निकल रही है और इसका मेन कारण है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है। और दूसरी बात, बॉन्ड यील्ड जो यूएस में है वो करीबन 5% पहुंचा है। तो ये एकमात्र कारण है कि लिक्विडिटी इंडिया से एफआईएस निकाल रहे हैं, यूएस मार्केट्स में वापस ट्रांसफर कर रहे हैं। और दूसरा जो कंसर्निंग फैक्टर मार्केट्स को अभी लग रहा है वो बेसिकली ऑयल के प्राइसेस से इन्फ्लेशन का एलिवेटेड रहना, ये डेफिनेटली मार्केट्स को थोड़ा बहुत चिंता में डाल रहा है। प्लस जो Q2 रिजल्ट्स के जो कंपनीज के नतीजे आ गए, इसमें हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ने नंबर्स निराशक अनाउंस कर दिए हैं, तो इसका भी असर मार्केट पे हो गया है। मेरे ख्याल से यही 2 इम्पोर्टेंट कारण है को भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100-125 पॉइंट निफ्टी और थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हमको लग रहा है कि जो मिड कैप छोटे मझोले शेयर है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, बिजनेस कमेंट्री अच्छी है, वहां पे डेफिनेटली निवेशकों को अच्छे क्वालिटी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाजार के करेक्शन के टाइम पे आपको अच्छी कंपनी सस्ते में मिलती है। इंडेक्स पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत समय मार्केट और वोलेटाइल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। Avinash, given the global uncertainties, there could be higher volatility in the near term, thus giving long-term investors an opportunity to accumulate quality stocks, which you just mentioned as well. Do you suggest that we make higher allocation towards large caps as valuations are comfortable now, along with steady growth prospects? So definitely, see, I think what is happening is that the froth in the market is getting completely wiped out, and obviously wherever there has been extreme high overvaluation, we have seen a higher sell-off wave. As far as the choice between large cap and mid cap is concerned, I think, large caps have also come down to pretty attractive levels. I think sectors like automobile, auto component, capital goods, cement, real estate, these are all sectors where we have seen that, the business growth has been very strong. Q2 numbers have also been very encouraging. So I think investors should obviously put a larger allocation to large caps. Say around 60-70% should be allocated for large caps, and selective mid caps and small caps where the business model is strong, where the numbers have come out pretty well, and where the business commentary is good, can definitely allocate. See, I think you will always remember one thing, that in the, in a bear market or maybe in a panic sell-off market, you get good quality stocks at very good valuations, which you will never find in a very full-blown bull market. So investors who have a long-term kind of horizon to make money should use the dip, to add to their portfolios and take a long-term perspective for their, investment holdings. So अविनाश जी, जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं बाजार में, चाहे वो SIPs के थ्रू हो या जो रिटेल इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ सांत्वना या कहें कि एडवाइस देंगे कि कैसे वो इस सिचुएशन में भी अपना संबल बनाए रखें, और किस तरह का टाइम होराइजन है जो उनको ये जो अभी गिरावट आई है उससे उबरने में मदद कर सकता है? देखिए, पहली बात तो जिन्होंने पहले ही इन्वेस्ट किया है, मैं इनको यही राय दूंगा कि मेटल सेक्टर हो या IT सेक्टर हो, वहां से थोड़ा सा एक्सपोजर कम करिए।
लेकिन जो सेक्टर हमने आपको बोले वहां पे अगर इनकी इन्वेस्टमेंट है तो उनको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। हालांकि देखिए नजरिया जो उनको रखना है वो कम से कम 12 से 15 महीने का रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाजार वोलेटाइल हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में पैसा बनाने का जो पोटेंशियल है वो इंडियन मार्केट्स इन सेक्टर से अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स ने पहले पैसे लगाए, मेरा इनका यही मानना है कि पैनिक सेल ऑफ बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा निवेश का टाइम फ्रेम लंबा करिए, और इक्विटी में नॉर्मली लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है वो काफी अच्छी तरह से बनता है। ये करेक्शन ओवर ड्यू था जो अभी हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाजार और नीचे जाएंगे और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये टाइम फ्रेम अगर वो कम से कम साल 1.5 साल का रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा और उनको अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। Avinash, there's lots that dented the investor sentiments today. Tension in the Middle East, coupled with sticky U.S. Treasury, which you mentioned, yields at around 5%. Now, what is it that can bring back the positivity amongst the investors, particularly so that the FIIs are also in a selling spree? You know, they have taken out 4,236.60 crore today out of the market. So how do you see, what is it that can bring back some positivity amongst the investors? No, I think my sense is that, 2 points. One is if the Israel war, subsides by, let's say, November, I think that would be a key positive, because markets would definitely look at the scenario more positively. Because the Israel war, if it extends beyond December, then definitely it is not a good sign. And secondly, the rupee should also stabilize. If the rupee doesn't weaken further, then I think that would mean that a lot of FI money could flow into the Indian market. See, currently what is happening is the dollar is appreciating, the rupee is weakening. Exports in India have been hit, especially from Europe and US. And that is the reason FIs are not bringing in fresh dollars, because they immediately lose on the currency factor. So I think these two factors are very important. If the rupee stabilizes, dollar inflow starts coming in India. And secondly, if the Israel war, gets over by middle of next month or November end, that would be a big sentimental booster. Although I would like to be very clear that November is also going to be equally volatile, because we've got 5 state elections, going to be there in the month of November. And elections are not liked by the markets at any cost. So their markets will continue to remain volatile. सो अविनाश जी, फेस्टिव सीजन में नॉर्मली एक इकोनॉमी में बॉयंसी आती है. अगर हम देखें तो सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, ऑटो सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं. आपको लगता है कि वो जो फेस्टिव स्पिरिट है वो मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी इस वर्ष, ये जो सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए, पहली बात तो आपको समझना है कि जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो ना, तो आप डोमेस्टिक थीम्स को ज्यादा अहमियत दे दीजिए. जैसे कि एफएमसीजी हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है. जो इन्वेस्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के ऊपर बेट करेगा, मेरे ख्याल से उनके लिए दिक्कतें ज्यादा डिफिकल्ट होगी. स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में देखिए तो बहुत भारी भरकम बिकवाली आज आपको देखने को मिली. मेटल सेक्टर में भी बिकवाली देखने को मिली. तो डोमेस्टिक सेक्टर में हमको लग रहा है कि जो ग्रोथ आ रहा है, जैसे आपने भी कहा कि फेस्टिव सीजन में बिजनेस अच्छा हो रहा है, कॉर्पोरेट कैपेक्स अच्छा हो रहा है, जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है वहां पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी तेजी आएगी और ये कभी ना कभी तो शेयर के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगी. लेकिन ओवरसीज जो सेक्टर्स है, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, वहां से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए. So Avinash, today deep losses were witnessed in auto, financial and energy sectors, which you also mentioned a while back. How do you foresee these sectors going forward behaving? Will they come back? Will they do any better? Definitely. I think, if you look at the short-term view on the market, in a market which is down by almost 265 points on the Nifty, I think, today everything and all the stocks were down. In fact, the penny stocks as well as the blue chip stocks as well as the mid-cap stocks. So basically, today we couldn't say that it is a real reason why the stocks have come down. Sentimentally, markets were bad. In fact, today IRM Energy, a listed share which got listed at a discount of almost 10%. Despite the fact that it's a very well-known CNG player in India. So basically, automotive sector, auto component sector, I would believe that, they are still enjoying a steady demand level. I would not be surprised if the second quarter and the third quarter is equally good. And I think as far as the economy grows in double digits, and most importantly, GST numbers are growing steadily, I would believe that the auto sector and the auto component sector should do well. I think it's a matter of time.
I think we need to give some time. Today's fall has been more to do with the sentiment. सो अविनाश जी, अभी तक कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि भारत एक आउटलायर है, आउट परफॉर्मर है, ना सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि IMF और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा है स्वीट स्पॉट है भारत, बल्कि हमारा जो शेयर बाजार था वो भी आउट परफॉर्म कर रहा था. अभी क्या स्थिति है? क्या ये जो हम गिरावट देख रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड है? भारत किस तरह से स्टैंड कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ग्लोबली भी मार्केट काफी वोलेटाइल है. कल यूएस के मार्केट में भी अच्छी बिकवाली आपको देखने को मिली. वहां पे आईटी शेयर स्पेसिफिकली नैस्डैक में बहुत भारी बलकम बिकवाली देखने को मिली. और देखिए, इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अगर एफआईआईज की लिक्विडिटी लगातार निकलती जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ के मार्केट्स में अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लिक्विडिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी बाजार के मोमेंटम में. तो लिक्विडिटी जब तक बाहर जाएगी, डॉलर्स इंडिया से बाहर जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं मार्केट्स को थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पेन फेस करना पड़ेगा. हालांकि एक बात मैं कहूं कि लॉन्गर टर्म में यानी अगले 6 से 12 महीने में होपफुली इलेक्शंस होने के बाद, जनरल इलेक्शंस के बाद आपको डेफिनेटली एफआईआई वापस आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं और तभी डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन शॉर्ट टर्म में एफआईआई लिक्विडिटी जाने का मेन कारण जो रुपया का वीकनेस है, डॉलर की स्ट्रेंथनिंग है, यही फैक्टर्स इन द नियर टर्म प्ले आउट करेंगे. तो लिक्विडिटी अगर बाहर जाती है तो उसका मतलब है कि इंडियन मार्केट्स को भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा. So till then we have to live with volatility. एंड होप. एग्जैक्टली. चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने की सरकार की पहल क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं. 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा लाई गई 10 साल के दृष्टिकोण वाली भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 का एक अहम हिस्सा RCS उड़ान योजना है. इस योजना के अंतर्गत 27 अप्रैल 2017 को पहली उड़ान शिमला से दिल्ली तक की थी. ये योजना देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर करने पर केंद्रित है और आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लाई गई है. अभी तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं, जिससे इस योजना द्वारा हवाई संपर्क और हवाई यात्रा को विस्तार देने की दिशा में सरकार की सफलता का प्रमाण मिलता है. क्या कहेंगे आप? 6 वर्ष हो गए जो उड़ान योजना थी सरकार की, और हम देख रहे हैं कि इसका टियर 2, टियर 3 सिटीज जो अंडर सर्व्ड एरियाज थे उनमें विस्तार हो गया है हवाई यात्रा का. ये कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कैसे देखते हैं आप इन 6 सालों को? नहीं, बिल्कुल. देखिए, मेरे ख्याल से बहुत प्रोग्रेस हो चुका है और टायर 2, टायर 3 सिटीज में पहले जो हवाई अड्डे नहीं थे, एयर ट्रैवल नहीं था, वो अभी काफी बड़ी मात्रा में इंडिया में स्प्रेड हो चुका है. सबसे बड़ी बात, देखिए, इंडिया में बहुत बड़ी लेवल की परचेसिंग पावर है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ने से, चॉइसेस बढ़ने से लोगों का जो एयर ट्रैवल है वो भी काफी बढ़ा है. तो मेरे ख्याल से देखिए, ये तो शुरुआत है. आने वाले कम से कम 5-6 साल में और भी ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि इंडिया की जो रियल इकोनॉमी है वो रूरल इंडिया में बैठती है, छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में बैठती है. लेकिन एयरफेयर सर्विसेज शुरू करने से गवर्नमेंट ने काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान किया है. तो ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली कंट्री का इमेज और कंट्री का जो GDP ग्रोथ है उसमें काफी मदद दिलाएगा. The launch of reference fuels produced by Indian Oil's Paradeep and Panipat refineries, utilizing the intellectual talent available at Indian Oil's Research and Development Centre, is a dynamic achievement, said Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs. He was speaking at the historic occasion marking the launch of reference gasoline and diesel fuels produced by Indian Oil for the first time in India. Addressing the gathering, Shri Puri said that this step stamps our indigenous technical prowess, which gives impetus to the Make in India mission of the Government of India, and it is yet another initiative to foster the Atmanirbhar Bharat vision. This is the first time that India is venturing into the production of reference gasoline and diesel fuels. The homegrown development of these products, in line with international benchmarks, testifies to the brilliance and relentless hard work of Indian Oil. This achievement not only reduces India's dependence on imports, but also catapults India's energy industry
to the select global players armed with exclusive competencies. The minister highlighted the four-pronged energy sector security strategy, such as diversification of energy supplies, increasing India's exploration and production footprints, alternate energy sources and meeting energy transition through gas-based economy, and green hydrogen and electric vehicles. The adoption of four-pronged energy security strategy has been guided by the vision of the Prime Minister towards transforming India into energy independent nation by 2047, said the minister. Avinash, the four-pronged energy security strategy that the minister talked about goes and fits in very well with the vision of the Prime Minister towards transforming India into an energy independent nation by 2047. Your comments? No, I think it's a good move because, the government has always believed that energy security and basically should be the prima prerogative. And most importantly, the government has also focused on clean energy where, obviously it is free of any carbon emission. So I think in the longer term, this is definitely going to be positive because the world is moving green. We are obviously looking at, initiatives by the government where the carbon content is being reduced significantly. So to that extent, I think it's a long-term, kind of goal plan. And this will definitely be like not only in India, but even globally. एंड आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से हमने देखा एक लेवल पर फूड सिक्योरिटी, दूसरे लेवल पर जो फ्यूल्स सिक्योरिटी है उसको भी एक चैलेंज उत्पन्न हुआ जब इन कंट्री से फ्यूल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई. सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आत्मनिर्भर होना ईंधन में बहुत ज़रूरी है. नहीं, बिल्कुल. देखिए, लॉन्गर टर्म में अपने आप के ऊपर निर्भर होना बहुत बड़ी बात है. हालांकि ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसको काफी समय लगेगा. अभी भी हम नेट इंपोर्टर है अगर क्रूड की बात करें, लेकिन जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, ग्रीन एनर्जी है, वहां पे गवर्नमेंट का काफी जोर का फोकस है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आत्मनिर्भर जो एनर्जी रिसोर्स का जो मुद्दा गवर्नमेंट ने उठाया वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है. इसका इम्पैक्ट शायद आपको थोड़े समय के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में हो नहीं सकता कि एनर्जी सिक्योरिटी कोई भी कंट्री जैसे इंडिया को इमीडिएटली मिले. सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स विल टेक सम टाइम. Yeah, it will take some time. It is not going to be completely eradicated in a very short period of time. It will take some time before we are completely self-reliant. So, if you were to describe this reference fuels for the benefit of our listeners, what is reference fuels? So, I think it is that typically government wants to focus on green energy, green fuel. So, I think government has very clearly said that fossil fuel or typically fuels which pollute the environment, and basically which are emitting a lot of carbon content in the atmosphere, those are the fuels which are to be avoided. But in the very near term, almost all the thermal plants are operating on coal. Now coal is something which emits a lot of effluents, a lot of pollution in the system. So I think government is slowly and steadily trying to push the green initiative, and I think even corporates have been encouraged that if they do invest in green energy, they obviously would not only get some tax benefits, but that would obviously help them in their ESG initiatives. आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स पर ब्याज दर के प्रभाव से प्रमुख एशियाई बाजार भारी गिरावट में रहे. केवल चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक शुरुआती दौर में आई गिरावट के बाद संभलता हुआ 0.5% की बढ़त पर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.7% लुढ़क गया. जापान के निक्केई सूचकांक में 2.1% की भारी गिरावट दर्ज हुई. हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% के नुकसान पर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो आज यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा अपने नीतिगत फैसले की घोषणा से पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड समेत कई कंपनी परिणाम कमजोर रहने के बीच यूरोपीय क्षेत्र के बाजारों में भी दिन के कारोबार में मंदी का रुख था. जर्मनी का डैक्स 1.43%, लंदन का फुट्सी 0.82% और फ्रांस का कैक लगभग 1% के नुकसान पर थे. गौरतलब है कि ईसीबी ने अपनी ब्याज दर को ज्यों का त्यों रखने का फैसला ले लिया है और उन्होंने 4.3% की मुद्रास्फीति की दर को भी अभी
उच्च ही बताया है और एक चिंता का विषय बताया है। क्या कहेंगे आप अविनाश जी, जो ब्याज दर का जो एक मुद्दा है, ब्याज दर जो जैसा यूएस फेड ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि हायर फॉर लॉन्गर, यानी कि कटौती का जो सिलसिला है वो आपको क्या लगता है कब शुरू होगा? इन्फ्लेशन की स्थिति और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स की कटौती तब होगी जब इन्फ्लेशन यूएस में कम से कम 2% होगा, जो फेड का टारगेट है। अभी भी इन्फ्लेशन 4% के ऊपर है। जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तब तक फेड ने क्लियरली कहा है कि वो डेटा को रिस्पेक्ट करेंगे, और डेटा जब तक पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करता और इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तब तक ये कहना मुश्किल है कि इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आएंगे। एटलीस्ट कम से कम अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स का जो रेंज है वो एलिवेटेड ही रहेगा, और इन्फ्लेशन 2% का जो टारगेट है वो आने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम आपको लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना के लिए शायद थोड़ा समय लगेगा। Avinash, there's a lot of chatter around the slowdown in China. Is the fear for real? See, basically, data points from China are very difficult to authenticate. Let us make this very clear, because we don't get that kind of proper authenticated information flow from China. But one thing is very clear, that globally now, most of the economies, most of the companies have started avoiding China for their trade agreements, and they have started looking at putting a second kind of type of vendor arrangement with some other countries. And in that aspect, I think India will stand to benefit, especially, in pharmaceutical exports, in typically chemical exports. And I think most of the foreign companies are of the view that China's policy has been very anti-social. So to that extent, I think, yes, I think things are not all that great in China. And my sense is that if at all, the real estate bubble, it goes out of hand, then that would be a bigger problem for the Chinese market. They have been managing their economy artificially. Real investment in China has considerably slowed down, and that is actually seen by the slowing down in the GDP growth rates. So I think we'll have to wait and watch, for some more time to get a correct, authenticated picture from China. Very briefly, what is your expectation from the ECB meeting and the release of the US GDP numbers, which are to come later in the day today? No, I think my sense is US GDP numbers will come strong. See, the US economy is doing pretty well. I think the bigger challenge for US is basically how to control job growth and how to cool off the economy, because now the data points which are coming out clearly point out that inflation will continue to stay elevated. And as far as ECB is concerned, I think they would probably like to hold on to the rates and obviously take a call maybe in the next coming 2 to 3 months. But at least the near term, I think signals are very clear that interest rates are going to inch up, because even in Europe, inflation has started moving up. Okay. The US Treasury yields were heading back towards 5% yesterday, dragging shares around the world to multi-month lows in the middle of a busy week of corporate earnings, with the release of US GDP to come, as we said earlier, later in the day. The Dow Jones Industrial Average lost 0.3%, the S&P 500 fell 1.4%, and the Nasdaq Composite tumbled 2.4%. And in intraday trade, the Brent crude was trading at $88.56 per barrel. West Texas Intermediate crude prices were also trading at $83.68 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 84 रुपए की बढ़त के साथ 60,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 200 रुपए की बढ़त के साथ 71,985 रुपए प्रति किलो पर थी। ब्रीफली, आपको लगता है गोल्ड में तेजी बनी रहेगी इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में? नहीं, शॉर्ट टर्म में देखिए, मुझे लगता है कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में कोई पैनिक सेल ऑफ आता है तो गोल्ड में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एक डिफेंसिव एसेट होता है। लेकिन गोल्ड में कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि देखिए गोल्ड एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। गोल्ड का समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है अविनाश जी कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for being with us, Avinash. And before we close the headlines once again, key domestic stock indices end in red for 6 straight sessions. Sensex tanks 901 points, Nifty dips 265 points. Regional connectivity scheme Ude Desh Ka Aam Nagrik completes 6 successful years, and launch of reference fuel fosters Atma Nirbhar Bharat, says Union Petroleum and Natural Gas Minister. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.